so let's begin today's session. Happy evening. Good evening, guys. Okay, so we started the chapter fundamentals in partnership, and there we all the basic concepts are now done. We don't have to revise it fully, but a few concepts which I want to revise. P&L appropriation account. Tell me the debits in P&L appropriation account. Salary, interest on capital, commission. Tell me the credits, interest on drawings, net profit. Only two. Yes. Then, in any point of time, P&L appropriation, can we have a loss? No. Yes, we have appropriation. P&L appropriation, we can have loss. No. जितना प्रॉफिट उतना ही अप्रोप्रिएशन. लॉस कैसे होगा? जितना प्रॉफिट है उतना ही आप अप्रोप्रिएट करोगे. How can you have a loss? No. Then we saw interest on capital, interest on drawings. So before that, capital are of two types: fixed and fluctuating. In fixed capital, capital account and current account. In fluctuating capital, only capital account. Then I was talking about interest on capital and interest on drawings. Interest on capital, generally we calculate on the opening balance. And interest on drawings, what is the formula? Interest on drawings is equal to total drawings into rate by 100 into that box by 12. In that box, how do we fill the numbers? I have explained in the previous class. Now, today's class, we are going to do a full-fledged problems where either we will do P&L appropriation or partners capital, or we will do both. So, as did in the earlier problem, I'll solve in the Excel. And when I'm doing, I don't want anyone to copy. Please pay attention. I'll give you adequate time to copy. कॉपी स्कूल में भी बहुत सारे सॉल्यूशंस करते हो, याद कितना होता है? Okay, so profit and loss appropriation account. Amit and Vijay started partnership business on 1st April. Capital invested by them were 2 lakh and 1.5 lakh respectively. Partnership deed provide as interest on capital be allowed at 10%. Amit to get a salary of 2,000 per month and Vijay 3,000 per month. Profits are shared in the ratio 3:2. Net profit for the year ended 31st March 2024 was 2,16,000. Interest on drawings was 2,200 for Amit, 2,500 for Vijay. Prepare P&L appropriation accounts. Very, very simple and easy problem. In P&L appropriation, which item will always come first? Net profit. Net loss क्यों नहीं आ सकता? तो भैया अगर लॉस है, will be transferred to appropriation? Answer is yes. All possibility your interest on drawings is more than your losses. Let's say for example मेरा लॉस है 10,000 का, interest on drawings है 40,000. Still you have 30,000 profit to be appropriated. तो प्रॉफिट हो या लॉस दोनों ही P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है. अगर लॉस हो, अगर से फॉर एग्जांपल खाली भैया लॉस ही है तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा एंड दैट लॉस विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स. Okay, so हमेशा first item in P&L appropriation account is net profit or net loss. Always remember इस item को कभी नहीं भूलना है. So first item is net profit, and net profit which side will it come? Credit side. We have learned the journal entry. Can anyone recollect the journal entry? Net profit to P&L appropriation. So by net profit, amount is 2,16,000. By net profit 2,16,000.
And once you have posted net profit, go in the chronological order so that you don't miss out on any item. If you go in the chronological order, first item, interest on capital at the rate 10%. I will have one inner column also. So, 2, interest on capital. We have two partners, Amit and Vijay. What is the capital of Amit and Vijay? 2 lakh and 1 lakh 50,000 respectively. So, and in 2 lakhs, how much is interest on capital? So, 2 lakh into 10%, 20,000. And Vijay, 1 lakh 50,000 into 10%, 15,000. Total 35,000. That is our interest on capital. First item is done. Let's continue. Second item also done. Then, before you share the profits, check if there is any other appropriation. First item, always remember, first item is net profit, last item divisible profit. लास्ट आइटम डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी बचा कुचा प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट इनके बीच में सारे अप्रोप्रिएशन आने चाहिए. इज देयर एनी अदर अप्रोप्रिएशन? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो बाय interest on drawings, by interest on drawings, again two partners, Amit and Vijay. So how much is for Amit? It 2,200. Is this per month or for whole year? For whole year. This is for whole year. So Amit, it is 2,200 and 2,500. Total 4,700. 4,700. All the appropriations are done. Now what is the final step? Divisible profit. Calculating profit or loss. Calculating profit or loss. Yes, everyone. Is done, everyone. You can copy now. Understand and write. Don't blindly copy. It will be of no use. वो नीचे चले जाएगा और भी नहीं दिखेगा. इधर से दिख रहा था एक्सेल में. हाँ, इधर से.
Yes, can we continue? How many of you are still writing? Guys, you have to make it quick. Next problem onwards, you'll have P&L appropriation and partners capital both. Okay, so now let's move on. Let's move on. See the size of the problem. Problem number 52. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. 1st April, capital were A 5 lakh, B 3 lakh. During the year, the firm earned net profit of 5 lakh. And terms of partnership, they have given interest on capital, commission, salary, and commission. Partner drawing for the year 80,000 and 60,000. Net sales for the year was 30 lakhs. After considering the above facts, you are required to prepare P&L appropriation and partners capital account. This problem is going to be little lengthy. This problem is going to be little lengthy, but okay, let's start. Let's start. So as usual, first item to be posted is net profit. Net profit. How much is net profit? 5 lakhs. 5 lakhs. So the firm earned net profit of 5 lakhs. The firm earned net profit of 5 lakhs. Then after that, we can go in the chronological order of the question. Now, when they have asked both the items together, they have asked P&L appropriation and partners capital. I'll prepare it together. So कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए डेट नहीं है तो इट इज इररेलेवेंट बट भैया अगर 3 पार्टनर हो तो 2 कॉलम्स विल गेट एडेड, वन ऑन द डेबिट, वन ऑन द क्रेडिट. 4 पार्टनर्स हो तो अगेन 2 कॉलम्स ऑन बोथ साइड्स विल बी एडेड. सो पर्टिकुलर्स A and B, how many number of partners, that many columns. Why I am doing this together? Things will be very easy if we do together. Otherwise, सब entry को दो बार देखना पड़ेगा. Otherwise, you see once and we can directly post it. So to start with, interest on capital is to be allowed at 6%. So now who are the partners? A and B. How much is the A's capital and B? So A 5 lakh into 6%, 30,000. Now just to save some space, I'll write this as IOC. So 5 lakhs into 6%, 30,000. And for B, 3 lakh into 6%, 18,000. Both put together, 48,000. 48,000. First item is over. Like that, don't think. We have posted only in appropriation. Partners capital account में कौन post करेगा? यहाँ पे इन द P&L appropriation account आप दिखा रहे हो कि A को 30,000 मिलेगा, B को 18,000 मिलेगा. Whenever partner receives, अपन कहाँ पोस्ट करते हैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड. सो यहाँ पे फर्स्ट आइटम विल बी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. हमेशा ओपनिंग बैलेंस पहले आएगा. सो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. So by balance brought down, A का बैलेंस कितना था? 5 lakhs. B का बैलेंस 3 lakhs. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से साइड पोस्ट करूं? क्रेडिट साइड. मैंने आपको एक थंब रूल सिखाया था, जब भी पार्टनर को मिलता है या जो भी आइटम से पार्टनर का कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो वी विल क्रेडिट.
वी विल क्रेडिट। अभी ये 30,000 एंड 18,000 पार्टनर्स को मिल रहा है, राइट? यस। तो उतना उनका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम कैसे होगा? So by interest on capital, 30,000 and 18,000, 30,000 and 18,000. तो जो भी आइटम हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे सेम आइटम वही वहां पे भी आएगा। Let's continue. A will get a commission of 2% on net sales. So और सेल्स कितना है? 30 lakhs. So सैलरी है किसी पार्टनर का, हाँ। So 2 is commission या टू कमीशन ए। कितना कमीशन मिलेगा? कैसे कैलकुलेट किया? 30 lakhs का 2%, हाउ मच? 60,000। 60,000 ये हो गया कमीशन। देन ये और कहीं पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? पार्टनर्स को मिल रहा है या पार्टनर्स को देना पड़ रहा है? मिल रहा है। तो उनका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो क्रेडिट साइड बाय कमीशन। ए का 60,000, ए का कमीशन 60,000। So A point, B point, दोनों डन। B will get a salary of 5,000 per month. So to salary B, कितना सैलरी मिलेगा? 5,000 per month. So 5,000 into 12, 60,000। और कहीं आएगा? पार्टनर कैपिटल, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ये भी पार्टनर को मिल रहा है। जब भी पार्टनर को मिलता है अपन क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। सो बाई, सॉरी बीजे नहीं है इधर, बाई ए, सॉरी बाई सैलरी आएगा। बाई सैलरी बी को कितना मिल रहा है? 60,000। नाउ लेट्स कंटिन्यू। ये सी पार्ट भी हो गया। नाउ डी पार्ट। B will get a commission of 5% on net profit after deduction of all expenses including such commission. क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं ये लोग? Expenses. आफ्टर कमीशन। मैंने आपको दो टाइप ऑफ कमीशन सिखाया था। आई एक्सप्लेन यू 2 टाइप्स ऑफ कमीशन। कब भैया? नहीं, एक सेकेंड, फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन। कमीशन इधर चालू हो रहा है, प्रॉब्लम। हाँ, कमीशन, एवरीवन रिमेंबर बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग? यस। अगर बिफोर चार्जिंग हो तो अगर 10% है तो 10/100, आफ्टर हो तो 10/110। यस, इसका डिटेल लॉजिक विथ एक्सप्लेनेशन एंड नंबर्स मैंने सिखाया है यहाँ पे इफ यू सी ऑल द डिटेल्स आर हियर। सो नाउ हम ये प्रॉब्लम कर देते हैं। सो बी को क्या मिलेगा? 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। तो अभी ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई विल डू अ वर्किंग नोट हियर, वर्किंग नोट, commission for B. So profit after all expenses 332, everyone 332, and profit after all expenses is 332. So B का commission, come on everyone, 332 into 5/105. 332 into 5/105. Please calculate and tell.
ये कुछ वियर्ड सा आंसर आ रहा है 15,809.52, तो अपन इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 15,810, ये है बी का कमीशन। So to commission B 15,810, और कहां पे आएगा? कैपिटल में एक कमीशन ऑलरेडी है, शुड आई राइट अगेन? नहीं, इससे जरूरत नहीं है। 15,810, 15,810, दैट्स ऑल। कैलकुलेट द प्रॉफिट। एक सेकेंड, कुछ मैंने मिस कर दिया क्या? लेट मी चेक। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर वाज 80,000 एंड 60,000, इसका क्या करूं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा? यस और नो? नो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, ड्राइंग्स नहीं। अगेन रिपीटिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, ड्राइंग्स नहीं आता, ड्राइंग्स नहीं आता। तो यहाँ पे तो ड्राइंग्स कहाँ पे आएगा भैया? Debit side partners के बाद। Very good. Debit side of partners capital account. So two drawings. Amount 80,000 and 60,000. 80,000 and 60,000. तो ये वाला एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया, तो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। यस, नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट। 3,16,190. 316,190, परफेक्ट। 316,190। 316,190 divide into 3. 237,143. ओके, नाउ ये प्रॉफिट तो हमने फाइंड कर दिया। इस प्रॉफिट का और कुछ करना है? ए लास्ट रो, बाद में लिखना, पेन तोड़ दूंगा मैं। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट ऑन यू। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? तो वो मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया ना, मैंने कैलकुलेटर से किया है। ओके, नाउ ये जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इसका कोई रेलेवेंस है? इसको कहीं पोस्ट करना है? पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे? डेबिट साइड है, क्रेडिट? क्योंकि ये भी पार्टनर को मिल रहा है, तो इससे कैपिटल बढ़ेगा। सो बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कितना? 237,143 एंड 79,047। तो यस, अभी इसको टोटल करना पड़ेगा। एंड बाकी का जो भी है दैट विल बी बैलेंस कैरीड ऑन। यस, एनीवन? बस बाकी सब टोटल तो मैंने दे दिया, खाली माइनस करके बोलना है। फोर 12,857, ठीक है। ए का इधर ईशा 767. 747 correct है, 747. So what has happened guys, again please listen to me carefully. अभी हमको रोहित बाद में साथ में कोई भी डाउट हो मेरे को? हाँ, आईओटी लिखा हुआ है। हाँ नहीं है, अप्रोप्रिएशन नहीं है।
अगर हम ये पेज पे किए प्रॉब्लम, ये पूरा ही चैप्टर नेक्स्ट मंथ एंड तक जाएगा. इतना धीरे लिख रहे हो आप लोग. Everyone, is it done? How many of you are still writing? Thoda fast, guys. Okay, now we will move on. We'll move on to the next problem, problem number 53. So, A, B, and C were partners in a firm having capital of 50, 50, and 1 lakh respectively. Current account balance were 10,000, 5,000, and 2,000 debit. According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at 10%.
C being the working capital was also entitled to salary of 12,000. Profit were distributed as first 20,000 in the proportion of their capital. What is the proportion of the capital? Proportion of the capital. So capital ratio 1:1:2. 50,000 is to 50,000 is to 1 lakh. That is 1:1:2. Next 30,000 in the ratio 5:3:2. Remaining profits equal. भैया ऐसा arrangement भी हो सकता है. Partnership deed के हिसाब से अपन कुछ भी कर सकते हैं. We can have whatever arrangement we want. Prepare P&L appropriation account and pass necessary journal entry. Pass necessary journal entry for appropriation of profit. So इस question में they did not ask us partners capital account. They have asked P&L appropriation and journal entries. So now let's begin with P&L appropriation. So always the first item. How much is the net profit? 1,72,000. 1,72,000. Then we'll start with the appropriation now. What is the appropriation you see? First appropriation. Interest on capital. Interest on capital at the rate 10%. So now we have three partners A, B and C. So for A, 50,000 into 10%. How much? 5,000. For B, same calculation. B 5,000 and C 1 lakh into 10%, 10,000. So all the three put together 20,000. All the three put together 20,000. ये हो गया. C being the working partner was also entitled to salary of 12,000 per month. So to salary C, how much? 12,000. There's no commission here. 12,000 per annum. 12,000 per annum. Now, how much is the profit we have? 1,40,000. But distribution of profit. For distribution of profit. So, profit first 20,000 in what ratio? So, profit A, B and C. So first 20,000 in the ratio of capital, 1:1:2. So how much? 5,000, 5,000, 10,000, 5,000, 5,000, 10,000. Next 30,000 in the ratio. 1 second. Ratio. So first one was 1:1:2. Then next one 5:3:2. Yes, how much for each partner? 15,000, 12,000. 12 नहीं होगा. 9,000 and 6,000. And remaining profit. So total profit कितना है? 1,40,000. In 140, 20 and 30, 50,000 already distribute कर दिया. 140 में 50 already distribute कर दिया. Balance 90,000. Balance 90,000 equally. So everyone will get 30,000. Everyone will get 30,000. This is distribution of profit. So how much will A get? How much will B get? 50, 44,
and 46,000. तो भैया अभी ये तो हो गया, चलो P&L appropriation is done. Anyone have doubt here? देखो कितना प्रॉफिट है टोटल, अरे टोटल 140, उसमें 20 एंड 30 का रेशियो दिया हुआ है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, तो जो बाकी का 90,000 बचा है हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. Now, they have also asked us journal entries. They have also asked us journal entries. So, yes, what will be the first journal? Interest on capital to A capital to B capital and to C. इधर एक मिस्टेक है. Current. Why? Because they have current account, so it means fixed capital. Fixed capital. So you cannot use capital account, you have to use current account. Now amounts. 5,000, 5,000, 10,000, total 20,000. Next entry. Very good. P&L appropriation to IOC. P&L appropriation to IOC 20,000. Next salary के लिए. Salary to C current account. Salary to C current account amount 12,000. Then next P&L appropriation. P&L appropriation to salary. P&L appropriation to salary, it is 12,000. Now moving on. तो भैया हमने IOC की एंट्री पास कर दी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पास कर दी, और क्या पूछा है, पास जर्नल एंट्री फॉर. So P&L appropriation to A, to B, to C. 1,40,000 का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, A को 50,000, B को 44,000, C को. Yes, come on, write quickly.
Done? How many of you are still writing? Okay, so let's move on. आज 1 घंटे में हमने खाली 3 प्रॉब्लम किए. Close to 1 hour, and we have done only 3 problems. Okay, so now we will move on. Now, अगर मेरे को कोई यूनिक एडजस्टमेंट मिला तो अपन डिटेल में करेंगे, अदरवाइज आई विल डू इन शॉर्ट एंड विल मूव ऑन. कि सेम एडजस्टमेंट बार बार आईओसी को डेबिट करना, सैलरी को डेबिट करना, कमीशन को डेबिट करना, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. सो अगर मेरे को, मैं आई विल नॉट स्किप एनी प्रॉब्लम. दैट्स अ